Bismillahirrahmanirrahim. So today, if we say, for example, int AR of size, say 20, what is happening? The 20 is not stored in AR. It says it's an array of size 20. That means you get a 20 boxes of integers, 20 boxes of, and AR is nothing but a pointer. AR is nothing but what? Pointer. Get hold of a little bit of pointers today. Okay. Now AR is a pointer. Now you can access this two ways. And the elements in this array, for example, is equal to, for example, I say they are equal to 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, whatever, 5, comma 6. Now I got 6 elements in it, and you want to access these elements. Okay, and you can access these elements two ways. Either you can access using the indexing of array indexing, okay, or you can use the pointer, or you can use a, that is, if I say printf \n %d double quote close comma, say for example AR of 4 मुझे प्रिंट करना है, कौन सा? हाँ, equals to %d. I want to access. I don't want to access all elements. I'm using for loop. If I want to access all elements, that I will use a for loop. But I want to access the fourth element. That is 0, 1, 2, 3. That means this 4. I want to access this 4. So how can I do that? I can say comma AR of 3, right? If I say AR of 3, it will print me the AR of 3, right? The 4. That is AR of 4 is equal to 4, right? \n. This is, I used it using the array indexing. AR of, then I say like this, AR of 3. So it will see what is the base address in AR. What is the base address in AR? And it has plus it with 3 into 4. 3 into, because 3 into 4 is how much? 12. So what are the base address was? And plus 4. For example, if I want to print, if I print here, printf %u means %u means what? For unsigned, and it's for usually addresses we print like that. Okay, and I am printing %u double comma address of AR, na base address cache AR. Okay, AR is equal to comma. Okay, what I print? AR. I just print the AR. Okay, that is 635,668 whatever. Is equal to %. Now I say like this, AR is equal to, this is the address of, this is the base address. This is what? Now if I want to print the address of third location, I want to print the address of what? Third location. I copy this out and I paste it. AR of 3, I mean to say, huh? Not AR of 3, but it's actually the address of AR of 3. So I should say ampersand AR of 3. Because address of, because AR of 3 will give the element. That is the guy 4 there. What is the address of that? What is the? ये यहाँ पे literal आएगा ना? ये ऐसे दिखेगा. यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ मतलब kind of इसका address क्या है? Address of, I could say ampersand AR of 3 or address of AR of 3 क्या है? So that means AR plus 3 में करूँगा. AR. So it will not do like plus 3 to the previous address, like 688 था उसको plus 3 किया. Rather it will add 3 into 4. That's how much? Add 12 to it. 88 को 12 करो. 688 को 12 add करो. That is 700. So internally it does 3 into 4. 3 into, because it's a 3 integers. It will add 3 integers to it. Okay. As you could see, it was 688. Now it is 700. So 12 add हो गया ना. तो 3 add नहीं हो गया, इसको 12 add हो गया. क्योंकि पहला बंदा जो ये वाला 1 है,
ये इस एड्रेस पे बैठा है 688 पे, दूसरा बंदा बैठा है 688 प्लस 4 दैट इज यस 92 पे, ठीक है। तीसरा बैठा है 696 पे, फिर ये वाला बैठा है 700 एंड सो ऑन। डू यू अंडरस्टैंड? सो इंटरनेट डज दैट। अगर मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि AR प्लस प्लस करने की, that I want to increment AR, the pointer which is pointing the first location, I want to increment it. It won't happen because it's a static point. It's a what? It's a static pointer. It won't happen. ये इसको ऐड नहीं हो जाएगा. You can't add this thing, right? ये मानेगा नहीं क्योंकि AR is a static pointer. अब इस तरह array जो हम काम कर रहे हैं, ये तो इस तरह मैंने किया। अब मैं अगर मैं इसका वैल्यू भी चाहता हूँ कि ना मैं पॉइंटर के हिसाब से वैल्यू लूँ, किसका? I want to get the value of this using the pointers. Using what? Okay. Then I will say, for example, AR plus 3, AR plus, but what is AR plus 3 giving me? The address. And I have to give value at that address. So I say asterisk and this thing. Asterisk AR plus 3. Okay, ये हटाना है, ये चीज हटाना है. So it's giving same thing, right? It has to give same thing. So that means either you access this element using AR of 3, index of array, so it will do indirection automatically, or you do indirection because you see AR. What is AR? Base address plus 3 internet will do 3 into 4, that is 12. Value add 700. अच्छा, value add 700. मैंने कहा 7 सुना मैं. Value add 700, whatever it was. That means whatever the base address is plus 12. It is not actually 3, it's plus 12 because implicitly it is done 3 into 4. If integer takes 4 bytes, if integer takes 2 bytes, then it will be into 3 into 2 only. If integer takes 8 bytes, it will be 3 into 8. That will be done automatically whatever the word size is. Word size means processor register size. Okay, कितना bit 32 bit है कि 64 bit है कि क्या है? Compiler. Basically compiler software का भी होता है ना, जिससे अगर आपका प्रोसेसर 64 bit है, लेकिन जो आपका कंपाइलर है वो 32 बिट ही है, तो फिर उसमें इंट का 4 ही बाइट, जितना बिट्स का प्रोसेसर है उतने ही बिट्स का मिलेगा ना। और लेकिन अगर आपका 64 बिट, जैसे ये मशीन है 64 बिट, लेकिन सी फ्री जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं इट इज ओनली 32, ये 4 ही देने वाला। अगर 64 बिट ही आपका कंपाइलर है तो वो 8 बिट देगा, 8 बाइट्स देगा, कितना? सो दैट विल बी 3 into 8, देन 24 ऐड होगा। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन ये ठीक था, लेकिन इसमें एक परेशानी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एरे सेलेक्ट की 20 साइज की या 200 साइज की, मैंने एरे खड़ी कर दी, ठीक है। आई गॉट साइज ऑफ 200, लेकिन कल को जाके मेरे पास 100 ही आ गए, फॉर एग्जाम्पल 100 ही आ गए, 100 जाया हो गए, ठीक है। और अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 200 लिया, लेकिन मेरे को 201 आ गया, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, तो ओवरफ्लो हो गया। So I have to throw it off and give it new, ठीक है ना। साइज आप यूजर से लोगे, लेकिन वो पहले ही लेना पड़ेगा ना, then later on you can't change। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल चैट प्रोग्राम कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, उसमें आप स्टूडेंट्स को बंदों को ले रहे हो, ठीक है। अब आपने साइज भी लिया, वो वर्किंग कांस्टेंट होना चाहिए ना, यहाँ पे कांस्टेंट पहले ही होता है ना, सी में वेरिएबल्स पहले ही खड़े होते हैं ना, तो ये तो पहले ही खड़ी करनी पड़ेगी, चाहे आपने ऐसे 200 दिए या यूजर्स को मांग के 200 लिए। उसने कहा 200, लेकिन बाद में मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एक ही बचा गया, 2 ही चैट में आ गई, बाकी जाया होगी। तब भी अगर उसमें चलेगा क्योंकि जाया हो गई, लेकिन चलेगा ना फिर भी प्रोग्राम। लेकिन अगर मुझे 200 के बदले 300 बंदे आ गए, तो आई कांट हेल्प इन इट। तो हम कहते हैं कि भाई साहब आप स्टैटिक मेमोरी ऐसे एलोकेट मत करो, बल्कि आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करो। यू एलोकेट मेमोरी एट रन, यू एलोकेट मेमोरी एट, यानी कि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट, यानी कि उसमें क्या फिर वो कैसे करेंगे हम, उसके लिए हमारे पास बेसिक फंक्शन, जैसे हमारे पास मेलॉक है, कैलॉक है, री अलॉक है, 3 है हमारे पास, मेलॉक, कैलॉक एंड री अलॉक। सो वी गॉट 3 दीज थिंग्स, ठीक है ना। अब मेलॉक कैसे काम करेगा, क्योंकि ये जो वाली थी अरे ये इंटीजर थी, कैरेक्टर भी हो सकती है, ठीक है ना, ये फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकती है। तो फिर हमारा उसका मतलब ये हो गया कि
क्योंकि मेमोरी अलग अलग टाइप की है ना, तो जब मैं +3 करूंगा वो उसके हिसाब से होगा, कैरेक्टर होगा उसके हिसाब से होगा ना, ठीक है। अगर मैं ये इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, चाहे आप ऐसे कर रहे हो, खुद कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो इसको, लेकिन अंदर से किस हिसाब से कर रहा है, जिस हिसाब से डेटा टाइप है। अगर कैर होता, कैर 1 बाइट लेता है ना, तो ×3 ये +3 होता खाली, अगर कैर होता, ठीक है ना, तो उसका एड्रेस नेक्स्ट होता। सो दैट मीन्स जो नेक्स्ट आपका कॉन्टिग्यूस मेमोरी, कॉन्टिग्यूस में क्या करना है, व्हाट इज कॉन्टिग्यूस, क्योंकि एरे इज ए कॉन्टिग्यूस, जिनको बॉर्डर साथ होगा। जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है ना, वो कितनी दूरी पे होगा, यानी कि एक ब्लॉक कितनी बिट्स का होगा, इट डिपेंड्स अपॉन डेटा टाइप, इट डिपेंड्स अपॉन, अगर कैर है, अगर फ्लोट है, अगर डबल है, तो अलग अलग तरीके से होगा, शॉर्ट लॉन्ग वगैरह, सो सारे उनके हिसाब से होगा। तो उसका मतलब है कि अगर मैं मेमोरी खड़ी करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब मैं खुद मेमोरी खड़ी करूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं जो ये मेमोरी है, आई डोंट क्रिएट इट फिक्स्ड मेमोरी लाइक दिस। अब मेरे को कुछ चारा नहीं है, या तो कम पड़ जाएगा या तो ज्यादा पड़ जाएगा। मैं कहता हूँ जब जरूरत आएगी, जैसे चैट प्रोग्राम है, जो ही स्टूडेंट आ गया उसी वक्त ब्लॉक खड़ा करो, ठीक है, एक ही ब्लॉक खड़ा करो उसी वक्त, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन उसी वक्त खड़ा करो। दूसरा आ गया, करो दूसरा खड़ा, तीसरा आ गया, करो तीसरा खड़ा, चौथा आ गया, करो चौथा खड़ा। एक हो गया कि आपके हॉल है, आपने उसमें 200 चेयर्स रखे, कहा मेहमान आएंगे, 200 चेयर्स रखे, आगे 10 मेहमान का खा, बाकी हो गए जाया। दूसरा तरीका था, आपको 200 रखे लेकिन आगे 300 मेहमान, आप क्या करोगे, होगी प्रॉब्लम फिर से। हम कहते हैं नहीं, जो ही मेहमान आएगा उसी वक्त हम चेयर लाएंगे। दूसरा मेहमान आ गया, करो चेयर खड़ी, तीसरा मेहमान आया, करो चेयर खड़ी, तो उस हिसाब से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी कि कम हो गया या ज्यादा हो गया, ठीक है। मेहमान निकला, करो फ्री मेमोरी, दूसरा मेहमान निकला, करो वो फ्री मेमोरी। वी कैन ऑल्सो डू द फ्री, वी कैन फ्री मेमोरी एंड वी कैन एलोकेट मेमोरी, डू यू अंडरस्टैंड। और अब मसला है कि मैं कैसे करूं ये, क्योंकि जो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो मेमोरी मैं एलोकेट कर रहा हूँ, इट इज ऑफ टाइप डेटा टाइप्स। मुझे इसके बाद इस पे जाना है, तो ये कितने बाइट्स का हो, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डेटा टाइप, ठीक है। तो अगर मेरे पास फंक्शन मेलॉक है, अगर मेरे पास फंक्शन क्या है, या कलॉक है, रियालॉक है, फिलहाल मेलॉक की बात हम करेंगे। अगर मेरे पास फंक्शन मेलॉक है, ठीक है ना, तो इसको फिर इंटीजर के लिए डिफरेंट मेलॉक होना चाहिए, जो कि इंटीजर वाला मेमोरी खड़ा करके देगा। कैरेक्टर के लिए अलग होना चाहिए, है ना, ये, और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए अलग होना चाहिए, क्योंकि उसको बनानी है ना, ये मेलॉक जो है वो खड़ी कर, मेलॉक को जो हम क्या करते हैं कि भाई तू 4 बाइट्स खड़ी कर, भाई तू 6 बाइट्स खड़ी कर, नहीं 10 बाइट खड़ी कर, जितना तो बोलेगा इतना वो उतना बाइट्स खड़ा करे करके देगा, ठीक है ना। लेकिन अब हिसाब कैसे लगेगा, इंटीजर के हिसाब से, फ्लोटिंग पॉइंट के हिसाब से। तो हम कहते हैं कि नहीं, आप एक काम करो, जो मेलॉक है इसको फ्री फ्रॉम दैट रखो, इसको रखो फ्री फ्रॉम व्हाट, द टाइप, द डेटा टाइप। तो मेलॉक हम बोलते हैं कि मेलॉक, तो एक काम कर तू, जितनी मैं तेरे को मेलॉक को, जितनी मैं तेरे को बाइट्स बोलूंगा इधर, उतनी तू खड़ी कर, उतनी तू खड़ी कर, जितनी भी बाइट्स बोलूंगा उतनी खड़ी कर। और जो जहां पे मेमोरी आपने ये किया, ओके, इसका पॉइंटर यानी कि एड्रेस तू रिटर्न कर, जो मेमोरी तूने खड़ी की उसका जो एड्रेस है, जैसे फर्स्ट में इसका एड्रेस है 24688, ये तू रिटर्न कर, ये तू क्या कर, गिव मी दैट एड्रेस। लेकिन दिस एड्रेस शुड नॉट हैव एनी डेटा टाइप, दैट मीन इट शुड बी ऑफ टाइप वाइड पॉइंटर, इट शुड बी व्हाट, यानी कि जो भी तो एड्रेस है, जितनी मेमोरी में तेरे को बोल रहा हूँ तो मुझे वो खड़ी करके दे, लेकिन डेटा टाइप नहीं देना, वाइड दे। अब मसला पड़ जाएगा फिर, लेकिन हमें तो इंटीजर चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। तो वो अब प्रोग्रामर का काम है कि वो उसको टाइप कास्ट करे। क्या करें, टाइप कास्ट, यू नो ना, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको टाइप कास्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है इंट a इक्वल्स टू 5, ठीक है, और मेरे पास है फ्लोटिंग वेरिएबल एक b। मैं कह रहा हूं b इज इक्वल 5 डिवाइडेड बाई 2, a डिवाइड, पहले मैं 5 डिवाइड करता हूँ, ठीक है, देन आई प्रिंट f, बैक स्लैश n %f, ओके,
sorry पहले लिखे ना ये क्या b equals to percent f double close comma b, ठीक है, backslash n. Now it has no issues. It says 2. It says only what? Is it an issue or not? It's an issue. It should be 2.5, but it's 2. Even if I say here a divided by 2, it is the same thing. I say a divided by 2, or even I said 5 divided by 2, because a was integer. A was what? And a divided by 2 divided by it does integer division. It does what? So it truncates your point. Even though b is capable of holding the points, b was floating point. Even though it isn't capable of holding the points, but still, this integer happened as what? As a floating point. No, it happened as an integer division. It truncated that. Okay, if I say 2.0 on the bottom, I said what? Now it's giving this, right? Because now it's a floating point division. It's what now? Because if one of the guys is a floating point, so it does the floating, compiler does floating point division. Now it gives 2.5. But if it is 2 only, okay, it's an integer division. In that scenario, but we can hold the points. But यहाँ पे division integer हो रहा है. So what I say is कि भाई साहब compiler में बताओ भाई साहब तो temporarily इस बंदे को float बना यहाँ पे a को. Temporarily make this as a float. Temporarily make a as a float. When I give it a go now, so it's called typecasting. It gives 2.5. So I am upgrading a to float, but temporarily for this statement only. After that, it will be again the integer. Does it make sense? After this guy, a will be what? It will be integer only. It will not be floating point. Okay, but for this instance, I upgraded it and typecasted it. So that is what I can do with the malloc in my program. I will tell malloc, you give me the void pointer, I will typecast it to int or whatever I want. Okay, so if I want to create a memory of my own, I don't want to do like this. I want to do different, like I want to create my own. So first thing is I need to create some integer pointer. And what? I need to create an integer, say asterisk ptr. I have a pointer. Now, int asterisk ptr is what? Concentrate properly on the screen. It's a pointer. It's a what? So it's an integer pointer. What? So it can hold the integer address. It cannot hold the character address and all. It has to hold the what? Integer address. क्योंकि अगर हम मैस अप करेंगे इसमें कैरेक्टर डालेंगे तो फिर जब हम नेक्स्ट ptr प्लस प्लस करेंगे ना वो 4 का प्लस करेगा. अगर आपने इसमें कैरेक्टर वाली एड्रेस डाला तो वो तो एक बाद ही है ना, कैरेक्टर तो एक के बाद ही है. यहाँ लेकिन इंटीजर पॉइंटर फिर 4 करेगा इंक्रीमेंट. सो दैट इज will give the problem. So we need a proper data type. Okay, so now I want to create a memory. Okay, and I know ptr can hold that memory. Ptr can hold that. So I say ptr is equal to, and I use a malloc. Okay, I could say 4 correctly. So give me the 4 bytes. Give me the. But what will malloc return? It will return the wide address, wide pointer. That means it will return the address of those 4 bytes wherever they are in the memory, but of no data type. That means it is your job to convert it into what? You have to say int asterisk, because it's a pointer. Now I have to use an asterisk. तो हम तो सोचते हैं ऐसे इतना उसने इस पॉइंटर के एड्रेस का यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया खाली फ्लोट. लेकिन अगर ये एड्रेस होता मैं कहता फ्लोट एस्ट्रिक है ना. यहाँ पे चूंकि जो malloc है it returns me the wide pointer. What is malloc returning? ये लिखो malloc returns wide pointer. Write it down. देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना इससे पहले वो सबको आता है. ठीक है, अब जाके चाहे C+ पढ़े हम C पढ़े, ये जो है कॉन्सेप्ट्स है ना, ये असल में कॉन्सेप्ट्स. यहाँ पे डिफरेंस बनती है बच्चों की कि आपको समझ आ रहा है नहीं, कल डेटा स्ट्रक्चर समझ आएगा या नहीं आएगा, ये इन चीजों पे मुनसर होता है. Now whatever we read from now on will make a difference. Do you understand? So try to work on it. Try to make copies and try to work and try to learn. Int asterisk, int
why is it asterisk? Because malloc returns the wide pointer, wide address, or wide pointer means address, right? So I have to convert that into whatever data type I have. If I have on a right floating point, I'd say float rest. If it's a character on the left, I have to say character rest. Do you understand? So it is the programmer's job to convert that into, क्योंकि वरना मुझे हर data type के लिए अलग malloc होना चाहिए था. जैसे pointer को तो अलग malloc आसुम. So as कर story खत्म. as दोस्त बाय as दिमाग से white पच्चीस चीज़ें से क्या करता था. इसे red करो कि pink करो. इसे इस दिमाग गाड़ी खड़ा करे. जो दिमाग में red करो, उस दिमाग pink, कुछ ना मैं किसी आज yellow color गाड़ी आस. Do you understand? So I give 10 whatever गाड़ी पच्चीस दिमाग color करो स्पाने चिपकोश के. Do you understand? Now PTR is holding the address of that 4 bytes. Okay. And if I want to put something into the PTR, I say, what should I say? Asterisk PTR or PTR? Asterisk PTR is equal to 23. And I print F. Should I say asterisk PTR is 23 or I should say ampersand PTR is 23? What is PTR holding? What is PTR holding? Address. So if you say ampersand PTR, so it means address of address. That makes no sense. So you have to say value at that address. So that's asterisk PTR is equal to 23. Printf \n PTR equals to %d double quote close \n comma. How will you print that? Again, as repeated, value at address. Okay, if you print PTR, you print the address of that. Okay, so you give it a go, and it shows the first error because malloc is defined in stdlib.h. Hash include stdlib.h. Now it shouldn't show any errors. Now PTR is 23, as you could see here. Okay, it was showing the address of the third is that 980. Now this time it has given the different address. 700, different address, but it's a 968 plus whatever it was. That's 980. Now I'm interested in this now. PTR is 23. Okay, if I print the same thing, I say copy, Control V. I want to print this 23, but I am not using. I want to use the array method. We can do that also. PTR of 0. PTR of, because it's only one guy, na? PTR 1 chain. It's only it's a PTR of 0 only. Now you see it's still giving the value 23, right? So I could use the array method or I could use the pointer method. But there is one thing which you need to create. Now next semester you will read a linked list, which will you use the dynamic memory allocation and create linked lists. We create one memory block here, then create next memory block there, and so on. That's called linked list. That's called what? That we will read in the next semester. What I am saying here is, but there is a one caution that if I do here, for example, here, I do PTR plus plus. This is allowed here. In arrays, it was not allowed because it's a static point. Now this is not a static pointer. This is just an integer point. If you want to make it a static pointer, then you have to write a static. Now it is an integer point. So what? That is not only that's a constant also. This AR. Okay. Now this PTR is not constant. It is not static. It's a normal pointer value. So you can increment it. So that means if you increment it, it has moved to the next location. Are you getting me? So what should be the output of these two? Huh? How can we 24? It's like this box memory, and here was 23 assigned in 23. PTR was locating here is 23. If say PTR plus plus, PTR is here. So whatever at that memory location is, that will be printed. And we don't know what is that. It's a garbage value. That will be the garbage value because you have moved on, na? You have moved. That's a garbage value. वो तो आगे चला गया ना, जहां पे आपने वैल्यू डाला था ये उससे आगे चला गया और आपको वो घूम भी गया. अगर आपने 10-15 की मेमोरी एलोकेट की थी, ठीक है, ये घूम जाएगा ना PTR.
तो इसके लिए आपका ये आपकी प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि वो इसको याद रखे। अगर आपको आगे चलना ही है तो पहले पीटीआर को किसी और टेम्परेरी वेरिएबल पॉइंटर वैल्यू में डालें और उस टेम्प को आगे चले, ठीक है। इस पीटीआर को उधर ही रखें, बिकॉज इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन। अगर आप उसको प्लस प्लस कर रहे हैं तो वो घूम जाएगा वो एड्रेस, सो यू कांट डू दैट, अंडरस्टैंड। बट ये आपकी जिम्मेवारी है कि इसको आप ख्याल रखें। एक चीज ये हो गया। दूसरी बात, एक तो मुझे इसमें अब एरे चाहिए पूरी 4 की, 10 की, 15 की, 20, जो यूजर बताएगा, जितना यूजर। नंबर 1 एक चीज वो। नंबर दूसरा चीज ये कि अगर मैं 4 यहाँ प्लग कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास इंटीजर चाहिए ना, तो हो सकता है कि मैं टर्बोसी पे काम कर रहा हूँ, वहां 4 का मतलब हो गया 2 इंटीजर, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट अ गुड वे टू प्लग इन द कॉन्स्टेंट्स। वी शुड से साइज ऑफ इंट। फिर जो मैशन होगी वो उतना देगी खुद ही। सो वी शुड नॉट यूज लाइक दिस, वी शुड अदर यूज साइज ऑफ इंट। एक तो ये चीज हो गया। दूसरी बात, हो सकता है कभी मेमोरी फेल होगी, इसने दिया ही नहीं वहां से, it failed to assign memory. What will you do in that case? If it failed to assign the memory, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? अगर ये फेल हो गया मेमोरी में, तो पीटीआर के अंदर नल आएगा। पीटीआर के अंदर क्या आएगा? So we should have a if block after malloc. That if ptr is equal to null, that is memory failed. Else में आप काम करेंगे, ठीक है। तो malloc के बाद हमेशा आप if else लगाएंगे। malloc के बाद हमेशा क्या लगाएंगे? क्योंकि malloc कभी फेल भी हो सकता है। If it failed, there may be memory नहीं थी वहां पर। हो सकता है आपकी मेमोरी ब्लॉक फुल हो गई, वहां मेमोरी मिली नहीं इसको। अब क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेगा, पीटीआर में नल आएगा। पीटीआर में क्या आएगा? So you have to check that. This is the one thing. So we said first we use size of int में पंगा नहीं रहेगा कि 4 है कि 2 है कि 8 है, ठीक है। जो भी है वो खुद देगा। तो चाहे फ्लोट आपको करना है, कैर करना, साइज ऑफ, नंबर 1। नंबर 2 में कह रहा हूँ जनाब, जो इफ एल्स लगाना पड़ेगा जरूरी। तीसरा, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को एरे चाहिए पूरी, ठीक है। मेरे को 10-15 जितने यूजर बोलेगा, ठीक है, उतना हम खड़ा कर सकते हैं। यानी कि अब ये हम रन टाइम पे कर सकते हैं ना, हम एक एक करके भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, हम एक एक करके मेमोरी पकड़ सकते हैं। दैट्स व्हाई लिंक्ड लिस्ट आती है। उसमें क्या करते हैं हम, एक जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को स्टूडेंट आ गया, क्या आ गया? यहाँ देखिए, ध्यान दें, मेरे पास स्टूडेंट आ गया। स्टूडेंट में लेकिन मेरे को पूरा रिकॉर्ड है, मतलब उसका नेम, उसका ये वगैरह वगैरह सारा। मैं एक स्ट्रक्चर खड़ा करूंगा, ठीक है। तो मैं malloc को बताऊंगा, वो तू मुझे स्ट्रक्चर खड़ा करके दे। ये देखा स्ट्रक्चर खड़ा करके, हो गया ना ये एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी। इसमें मैंने नेम वगैरह कर दिया। अब दूसरा स्टूडेंट आ गया, क्या आ गया? अब malloc को बोलूंगा तो दूसरा स्टूडेंट खड़ा करके दे, इसमें सारा उसका नाम वगैरह होगा। और इसमें एक पॉइंट रखेंगे जो इसको लिंक करेगा, क्योंकि ये तो पता नहीं कहां पर करेगा ना मेमोरी में, ठीक है। लेकिन ये दूसरा किधर है? इस पहले वाले में उसकी लिंक रखें। तो जो वो malloc एड्रेस देगा वो इसकी लिंक में डालेंगे। जो malloc एड्रेस करेगा ना रिटर्न उसका, उसकी क्या डालेंगे? पहले वाले में लिंक, एंड सो ऑन, सेम वे वी लिंक टुगेदर। एंड उससे हमें जो होगा, जो भी हमें जितने स्टूडेंट आएंगे उसी वक्त खड़ा करेंगे हम स्टूडेंट्स। You understand? That's called a linked list that we do in the next semester. Now here, that's easy. If you understand the concept, it becomes very easy. So we have to go stepwise. You understand? Okay. Now what I want to do, I want to have the full memory. I want to have a full array. So how I will ask user first for the limit. Maybe I have an integer here limit. Okay, I ask user the limit. I ask user what? Here I ask user printf \n. यहां से हम करने हैं डायनेमिक मेमोरी। क्या कर रहे हैं? डायनेमिक memory allocation. Printf \n, enter the limit, whatever. He will give a limit and we'll scan that up, scan up %d, okay, in double quotes, comma, ampersand of limit. Now I know the limit. I will say here limit into size of int. Okay, so malloc
will create, if I say, for example, limit 4, what will malloc do? Malloc will create me the 4 bytes. Malloc will give me what? 1, 2, 3, and 4 bytes. It will create 4 times integer, 4 integer types, 4 integer block of memory, like arrays, like array grading. And whatever the address of the first is, say its address is 24688, this will be returned as a wide pointer. Then it will be typecasted, and PTR is holding this address, and PTR is pointing to the first block. But if you do PTR plus plus, it will point to this location. PTR is pointing to this location, but you shouldn't do that. Never do that. Why? Because then it will be lost. Where was the first block? So never do that. Do you understand? Concentrate. Don't yawn. Anji? कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं PTR +0 +1 +2. ये PTR is equal to PTR +0 क्या अलग बात होती है? अगर मैं करूँ PTR to PTR +0, then I'm incrementing the PTR. PTR to PTR +1, that's the problem. I don't do is equal part. I will do only PTR +2. PTR plus PTR अपनी जगह ही है. जैसे इस कमरे का एड्रेस 2 है, मैं कर रहा हूँ 2 + 4, what is that? So 6 पर जाएगा ये, लेकिन वो अपनी जगह 2 पे है. दूसरा हो गया PTR ++. That means PTR is equal to PTR +1. So it is assigning PTR the new value, right? So I can do PTR plus. By that way I can access it. So now I want to drop elements into it, and I want to read elements from it. So I can do it 2 ways. Either I will do it in a pointer way or an array way. Is your choice. What do you do? We can do the same array way or pointer way, like we did in an array. We can do it here. Samjheva? So that means I need first what? A loop. For that I need a loop variable I, because variables all have to be here in C, the first, right? So I say for I equals to 0, I is less than limit I ++, you know? नहीं, ये यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे करना है ना, कट इट. मेमोरी खड़ी होगी ना, पहले मेमोरी खड़ी हो गई, उसके बाद मुझे अब इसमें भरना है, ठीक है ना? For I is less than limit I ++, what shall I do? पहले एलिमेंट करना है ना, printf enter the element, printf \n करके करेंगे. enter हम कहेंगे ऐसे PTR of %d comma I, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यानी कि PTR of 0, PTR of 1, PTR array की तरह बोल रहा हूँ ना मैं. इसको मैं करूंगा scanf. क्या करूंगा? scanf. इसमें डालेंगे %d डबल क्लोज कामा, ये डालूंगा मैं PTR plus I में. पहली बार होगा PTR of PTR +0 मींस PTR में ही डालो, क्योंकि PTR पहला ब्लॉक का एड्रेस होता है. Then PTR +1, I +2. Internally it will do plus. No, internally it will not do +1. It will do 4 into 1. Okay, then it will be PTR +2. Internally PTR +2 into 4, 8, up to the limit. Or I could have written it like this also. This is your choice how you write. You could have written a scanf like an array. %d double close comma. If I say PTR, we have PTR of I. PTR of, but should I write PTR of I like this? Are they same? Are they same? These two same? Huh? Which will try this? PTR of I in the boxes will give the inside element. Okay, PTR plus I will give the address. It's the address. Because when I say in the box, it means inside. But I have to drop an address, na? So what should I do? I have to use ampersand. I have to use
Like I said in arrays, if you want to drop into the array, see, I have got array or point, the same thing. I'm doing dynamically, or this is an array, it's one and the same thing. Okay, you can access it in both ways. I am saying this is my array, or this is my pointer array, dynamically created or statically created using malloc or simply array method created like this int AR of 24, whatever. Okay, now this is for example AR. Inside element is 2, 4, 6, 8, for example. If I say AR of 0, it means 2. Say its address is 666. 660 is address. What will its address? 664, 668. Okay, so if I say AR of 0, it means 2. When I have to drop at the address 660. So either I have to say ampersand AR of 0, that means drop at the address of this 2, whatever the block is. Okay, AR of 0 doesn't mean 2. Again, 3 I say, that means 3. It means whatever is inside. It means inside. Okay, it is indirection done. Or if I use a pointer, I have to use asterisk. Asterisk AR. Asterisk AR means whatever is AR pointing to, what is the value at that is. That means go inside. That means inside the box. But when I drop, I have to drop at address. Scanf mein karte na address pe drop. So I have to drop at 660. So that means I am saying drop at address of AR of 0. ठीक है ना? इसमें AR खुद ही address है. So अगर मैं AR को drop at AR, drop at AR because AR is itself address. So AR means 660. If I have to drop next, AR plus 1. So I say AR plus I, whatever I was 0, then it was 1 and so on. So if you use this way, then you don't use ampersand. But if you use this way, then you have to use drop at the address because this goes inside. This AR of 0 is same as asterisk AR. Asterisk AR plus 0, right? This is same as that. So get यहाँ पे दिमाग दो ना यहाँ पे AR of 0 and asterisk AR plus 0. It is one and the same thing. It is one and a, is it? And if you say like drop at the address, drop at the in scanf, you have to say drop at AR plus 0. But if you use that way, then you have to say same is here. When you use PTR of I, it means going inside. So you have to use ampersand at that time. But if you use this way, PTR is itself an address. So PTR plus, then you don't use ampersand. You can use both things for the array, static arrays as well as dynamic arrays. You understand? समझ आ रहा है? So एक ही करेंगे, इसको बंद रखना है, ठीक है ना? Scan करेंगे ना एक ही, दो बार करेगा. And if I have to print the same array, I will use the copy it. Whatever this is close now. अब मुझे करना है print control V बाद में. For I is equal to 0, I is less than limit I plus plus. Printf मैं कहूँगा ऐसे PTR of percentage D is equal to I is equal to percentage D, हाँ? Is equal to percentage. ठीक है ना? बैकस्लैश करेंगे फिर दूसरा में आएगा I कमा क्या आएगा? अगर मैं ये लिखता हूँ, मैं इस तरह लिखता हूँ PTR. Should I write? What should I do? I should use as because PTR is address. It is address. I have to give now value at address. I have to go now inside. I have to do indirection. So I have to say asterisk and this thing first in a parenthesis. First calculate address then asterisk. और तौकीर बताएगा खाली अगर मैं array method से करूँगा. I want to do the same thing using the array method. ठीक है? How I do that? I don't want to use this pointer. I want to use the array. How I do that? Like this. It is again the same thing. It is same thing. It is automatically done with the compiler in direction. This one is done by you. If you say box, it is the indirection being done. It is going at that address inside. What is the PTR holding address? Go inside, value at address. So rather you use asterisk to go into the inside the address,
or use what? PTR of I means boxes. The box is done with the compiler. The indirection is being done. What is being done? Does it make sense? Getting concept? So it's saying enter the limit. Say I say 5 elements, bro. I want a 5 elements. Then enter the PTR of 0. Say 1, 2, 33, 44, 66. Now it's giving me the wrong answers. 800. What's the problem? Let us see. We have done something wrong, no? Okay. यहाँ से यहाँ तक for loop है. Enter percentage di element आ गया हमारे पास. Scanf, हाँ? हाँ. Yes, that was the problem. I comma s period. ठीक. उस percentage की जगह लेना था ना ये. So what should I do? So I say under the limits, say 5 elements. I got 22, 33, 44, 55, 12. So we got it. 22, 33, and so on. You understand? इसको body दूंगा निकाल के. Where is the coding classes? Okay. Hello.